Our today's class is for 12th and our subject is zoology, The topic is regarding the fossils. We have already discussed the two fossils of this class, Lamellibranchia, Pecten and Spirifer. Now we will try to understand what is fossil Cardita. The Cardita fossil has phylum Mollusca and class Lamellibranchia. Its genus is Cardita. When we see the age, it is Triassic to present. More when there we see the morphological characters or features of this shell Cardita, it is an oblong-shaped shell. The shell of this Cardita is elongated in equilateral bivalve shell, equivalve. Both the valves are equal in outline. So the dorsal valve is bent either interiorly or posteriorly. Linule, which is present in Lamellibranchia, as you have seen, linule and escutcheons, these are present in especially in Lamellibranchias. The linule is small and umbones, that means the beaks or umbos are present on both the valves. In the right valve, there are two long parallel caudinal teeth which are present on the hinge line, and these teeth are nearly horizontal, and these teeth in this Cardita shell are very small teeth. Interior lateral teeth is also present, which is well marked and is clearly shown. When we see that in this Cardita shell, in the left valve, one short interior caudinal teeth is present. As when we compare this shell, it is altogether different in the structure of teeth from Superifer and Pecten. In the center of the shell in the center of this Cardita shell, there are two large adductor impressions known as anterior adductor impression and posterior adductor impression. And there is a line which joins these two adductor impressions. This line is known as pallial line. If this line is curved, or in other words, it is bent, then this is known as pallial sinus. There is also a hinge line which is present on this shell. Also, there are broad radiating ribs and these are ribs and these are concentric striae. So network of ribs and radiating ribs and concentric striae are there. The shell of this Cardita is made of conglomerating matrix. In other words, we can say it is a chitinous type of material. Example, when we see it is Cardita anticulata or Cardita planicostata. The shell diameter is almost 7 centimeter. So when we see this shell, the diameter of, if we measure the diameter of the shell, it may be 7 centimeter almost. If we try to understand simply, ये जो हमारा फॉसिल कॉर्डिटा है, इसका जो फाइलम है मोलस्का है और लेमिलिब्रांचा क्लास से ताल्लुक रखता है, जीनस कॉर्डिटा ही है और इसकी एज ट्रायसिक से प्रेजेंट है। जब हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करेंगे या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो हम इन शेल्स का पढ़ रहे हैं, ये शेल ओब्लॉन्ग शक्ल का होगा, एलोंगेटेड होगा, लंबा एक साइड में होगा या इनइक्विलेटर भी कह सकते हैं, बाइवालो दोनों वालो है और इक्विवालो भी इन आउटलाइन में है ये शेल। ये जो डॉर्सल वालो इसका है बेसिकली ये इंटीरियरली बेंट होता है या कभी पोस्टीरियरली बेंट होता है। इसमें नो डाउट लेमिलिब्रांचास में हमने देखा है लैन्यूल्स और एस्केटियंस प्रेजेंट होते हैं या हिंज एरिया ही जिसको हम कहते हैं लैन्यूल, कि इसके सामने हिंज एरिया क्या होता है। इस लैन्यूल जो यहाँ का है वो बहुत ही छोटा है इस शैल में कार्डिटा में, एज कम्पेयर जब हम मेन लेमिलिब्रांचा के लैन्यूल की बात करेंगे उससे बहुत ही छोटा होता है। और दोनों शेल्स के ऊपर जो अम्बोनस पे जहाँ से इनटेक फूड इनटेक जहाँ से गुजा लेता है एनिमल, इस शेल में वो अम्बो जिसको हम कहते हैं या बीक कहते हैं दोनों शेल पे मौजूद है, दोनों वाल्व्स पे अलग अलग वाल्व्स पे मौजूद है।
और एक खास बात है, राइट वॉल में दो लंबे लंबे पैरेलल, राइट वॉल में दो लंबे लंबे पैरेलल दांत होते हैं इसके, जो नियरली हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहे हैं, और कभी कभी एक छोटा सा इंटीरियर लेटरल टूथ होता है जो एक वेल मार्क्ड होता है इस शेल पे। लेफ्ट वॉल में हम जब देखते हैं इसको, और एक शॉर्ट इंटीरियर कार्डिनल टूथ दिखाई दे रहा है इस शेल के अंदर। इन द सेंटर ऑफ द शेल जब हम बात करेंगे, यहाँ पे दो एडिक्टर इंप्रेशन मैंने पहले ही बताया, ये इस एनिमल को हेल्प करते हैं इन वाल्व्स को ओपन करने में और क्लोज करने में। दीज एडिक्टर इंप्रेशंस आर फॉरली particularly for the function of either closing the shell or opening the shell. Though these are known as interior adductor impressions and posterior adductor impressions. The line which join us, जो line ये join कराती है इन इंटीरियर या पोस्टीरियर एडक्टर इंप्रेशंस को, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। जब स्ट्रेट इफ इट इज कर्व, अगर ये कर्व शक्ल में होगी ये पैरेलल लाइन, तो उस सूरत में हम इसको पैरेलल सिन्स कहते हैं। ये कभी कभी ये इस शेल के ऊपर, जब कभी कभी नहीं बल्कि हर वक्त इस शेल के ऊपर रेडिएटिंग रिब्स और कंसेंट्रिक स्ट्राइड्स का एक खूबसूरत नेटवर्क होता है। ये तो रेडिएटिंग रिब्स हो गए लंबे लंबे, और जो हॉरिजॉन्टल है इसके, इनको हम कंसेंट्रिक स्ट्राइड्स कहते हैं। इस नेटवर्क की वजह से ऊपर की सरफेस को या ऑर्नामेंटेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है इनकी वजह से, इन रेडिएटिंग रिब्स और कंसेंट्रिक स्ट्राइड्स की वजह से। ये शेल जो पूरा है ये कॉन्ग्लोमेरेटिक मैट्रिक्स जो होता है उसी से बना होता है। और जब हम शेल के लेंथ या ब्रेड की, इसका जो डायमीटर हम देखते हैं गोलाई में, तो डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर के करीब होता है। इसकी एग्जाम्पल्स की जब हम बात करेंगे, कार्डिटा एंटिक्वेटा और कार्डिटा पेनिकोस्टेटा की वजह से जो प्रेजेंट है, जिनकी वजह से हम इसकी आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इस शेल की। ये जो हमारा शेल कार्डिटा है। सो दिस वाज द थर्ड फॉसिल कार्डिटा ऑफ दिस क्लास लैमेलिब्रांचा। इससे पहले हमने पेक्टन और स्पाइरिफर का कंप्लीट किया है, जो तीनों थे इस लैमेलिब्रांचा क्लास से ताल्लुक रखते थे। सो तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है ऑलमोस्ट, जब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स regarding Cardita fossil.